उड़ीसा में पर्यटन की अपार संभावना है। इस बार हम लोगों ने प्लानिंग कर रही हैं सर्किट बनाने की, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट। देयर इज लॉट ऑफ केव्स देयर एंड रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। we are going to make it as a Buddhist circuit so that the tourist will visit in the purpose one circuit, one purpose one circuit. So in that line we are going to make it in Ekamra corridor, so that in that is a spiritual corridor. You can visit Lord Lingaraj, Chausatti Jogini, all are heritage mandir, Swasari temple, Kedargauri, Rajarani temple, all are heritage related. They are spiritual tourism. We have going to develop adventure tourism in Devamali, in the high hill range of Korafut. We are developing the Simlipal, the dense forest view, the beautiful forest with tiger view you can see. And we are going to develop Hirakud riverfront in western side. We are going to develop Bhitarkanika ecotourism place. It's a beautiful place for stay and enjoy the boating. And from Puri to Konark, we are going to develop a heritage corridor. So people in the Bay of Bengal, the Bristol coastline is there, and a lot of sea view setups are now tourism is doing. I think the Konark temple and the Lord Jagannath temple, sea beach, everything is there. So in this year we are planning to develop 2-3 things. Like for the hotelers to come to Konark and Puri, the big hotelers, and now it is an assignment assurance from the government of India to develop the Puri International Airport, so that visitors will come directly to Puri and stay there. I think this year will be a planning year for tourism. एडवेंचर टूरिज्म में हमारे पास ट्रैकिंग है, स्कूबा डाइविंग है, और जैसे वाटर पार्क में बड़ी उंडरला वाटर पार्क अभी आया है स्टेट को, और कोणार्क ये कटक के पास एक बोट क्लब है जहाँ पे नीचे तैरना लोग सीखते हैं, और यहाँ से भी ज़्यादा पदक भी ले आए हैं। तो वो स्कूबा है, एयर पैराशूट भी हैं, और ट्रैकिंग भी है। और अभी उंडरला वाटर पार्क के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स वाटर पार्क जुड़ी हुई है। आगे की हम लोग प्लानिंग कर रही हैं, हमारी स्टेट में एडवेंचर पॉलिसी लगाएंगे, उसके बाद दूसरा जो है शुरू करेंगे। देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, जिन्हें उत्तर प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, आसाम और लोगों के सरकार के साथ मिलके ये टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का कॉन्क्लेव किए थे। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस टू शेयर द व्यूज with other ministers and the other officials and the experts of adventure tourism here, those who are the panelists here. So I think as we are going to develop the adventure tourism policy in Odisha, and there are a lot of scopes for adventure tourism in Odisha, so this conclave will help us to, I invited the all experts to come Odisha and share a dais with all our officials, so that we can make a conclusion what will be the policy will be better. I also visited the caves of Cherrapunji and see the adventure tourism in Meghalaya also. I think it will be very helpful for the interacting with all two states each other and exchange of टूरिज्म विजिट ऑफ द टू स्टेट ईच अदर। देखिए, मैंने पहली बार शिलोंग आई और चेरापूंजी काल मैंने देखा, बड़ी क्लाउडी थी,
लेकिन वेरी ब्यूटीफुल थी कि इतना क्लाउड हम एक ही साथ, जैसे स्काई और लैंड को एक साथ मिलते हुए देखा। और एंटर द केव्स ऑफ अरोहा caves I have visited, and there are a lot of homestays there. I visited 1 and 2 homestays, met the owners of that homestay, how they are promoting it, how they are getting the businesses, how tourist is attracted to us, and how much tourist footfall is controlled by homestay. That is my view, and I have visited all of this. It is a very good experience for me, because homestay is not up now. Only in Koraput district we have 1-2 homestays, otherwise on all districts of Orissa we have not introduced it. It is very useful for me to learn and see that. Maniabandhu is belongs to my district, where I have worked in politically the first round. Maniabandhu is a village. The people's handlooms are the beautiful. Every house is full of handloom weavers, and that village is itself is 50% of the handlooms are controlled by them. They are giving, मतलब सूते धागे भी देते हैं और साड़ी भी देते हैं। इस गांव में हर एक घर में जैसे कुटीर शिल्प लगा हुआ है। Every household is getting very good income, and that woven handlooms, आई थिंक उसको कटकी साड़ी हम लोग बोलते हैं। जो कटकी साड़ी मानियाबंद में होती है, थोड़ी सस्ता भी होती है, संबलपुर से सस्ता होती है, लेकिन इस लुक में आती है और बड़ी टिकाऊ साड़ी है। डिफरेंट उड़ीसा के कल्चर को लेके डिफरेंट असाइन में साड़ी करते हैं। ब्यूटीफुल साड़ी, एवरी हाउस is involved in that. So that village was declared. So we are very happy and thankful to our Prime Minister to declare that Maniabandhu was the heritage village. देखिए, now we have seen the adventure policy of the government of India is not introduced in our state. It was previously 2022. The previous government has decided to do it, but not interested to implement. So nowadays of adventure tourism, because the youths are visiting the tourist place and enjoying the time, they wants to relax in different adventurous journey. So adventurous sports, if you introduce that, so the safety of adventure tourism and the tourism policy will attract the more youths and footfall of the tourists there. इस पर मैंने एक रिव्यू में लिया था कि इको टूरिज्म हमारे कोणार्क में है, भितरकनिका में है, और सिमलीपाल में हम भी है, देवमाली में भी है। हर एक जगह हम लोग इको टूरिज्म को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और इससे अच्छे सुखद अनुभूति भी है उड़ीसा टूरिज्म को। लेकिन इस बार हमने थोड़ी सी सस्ता देने की कोशिश कर रही हैं, so that those who will visit, they should visit in large numbers and enjoy our tourism sites. तो for that sake we have decided थोड़े से कम करके उड़ीसा को दिखाएंगे, सब लोगों को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट को ही एक ब्रांड बनाएंगे। इस बार हम ज़्यादा टूरिस्ट आए, भितरकनिका में भी, सिमलपाल में भी। देयर इज लॉट ऑफ वाटरफॉल्स इन केंदुझर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, लाइक घाघरा, सन घाघरा एंड खंडाधर इन सुंदरगढ़. सो वी आर प्रमोटिंग all these places to attract tourism. Now I hope this time everything is with us, everything is given by nature to Orissa. All are 484 kilometers of pristine coastal Bay of Bengal is surrounded us, and there are high hills,
all are like Simlipal, Bhitarkanika, the tortoises are going there. So there are Chilika Lake, everything is given by God. So now we are just adding adventurous sports so that people who will visit there, the tourists will stay there, enjoy the adventure tourism, adventure sports there, and if the tourist will come and stay 2-3 days there, the economy of that periphery and ultimately the economical condition of the Odisha will be rise through this.